तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो लोगों को जानने चाहिए दैट दिस इज द फैक्ट? बिकॉज हमारे इंडियंस की आई थिंक देयर इज अ टेंडेंसी दैट वी विजिट अ डेंटिस्ट ओनली व्हेन वी आर एक्चुअली फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम. Companies coming up with ads that claim so much so that they actually claim to offer you the universe as far as the toothpaste and the toothbrush and all these products are concerned. What is your take on the claims that these big companies make about oral health? Hello and hello my innocent souls. Welcome to yet another brand new episode of Elevate with Alok. Today we have someone who is responsible for making you all smile, because a smile is a curve that sets everything straight, unless you want to wear braces. Okay, so with a lot of happiness, ecstasy and pleasure, may I invite a commendable, remarkable guest today, Dr.Yojna Shriwas. Alok for having me here. So how's the feeling coming to this energy filled podcast I think आपने एनर्जी में आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो आपकी एनर्जी लेवल से मुझे लगता है कि I think thank you so much. To be good. This energy is the outcome of so many people asking to bring a dentist on this podcast, and trust me guys, she is the best of her field. And if you all like my smile, this is the secret of that smile. So thank you so much for your time. I think it's amazing, and we have been wanting to do this podcast for a very long time. So without wasting any time, we would want to know what motivated you to become a dentist. Good smile. Definitely. To begin with. हाँ, initially मैं dentist के बारे में जैसे I have never been to dentist in my childhood. Okay. So even I came to know about dentists when I entered dentistry. Alright. Because that time in my selection जब ऑल इंडिया से सिलेक्शन लिया और मुंबई में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो dentistry was new to me. I just got a best college of country, so I selected and I thought the waiting वाला जो होगा तो I'll get another. So and after that also मतलब medical भी जो है वो मुझे मिल गया, but 6 months in dentistry I loved it. Oh, wonderful. So introduction to dentistry was so good, and this is the field for me because I don't want to handle so much of emergency. Oh, that is the perfect. I want to pursue my hobbies and life. We can all be thankful and feel a gratitude that you love dentistry, because we are all having that bright smile because of you, and I can say it on behalf of your patients also. But mind me if I have this myth or misconception, because doctors or dentists are considered to be a little boring, जिनको patients देखना पड़ता है सुबह से शाम. So are the dentists really so boring? Like, what is your opinion about it? Ask my patient. I'm not at all boring. Oh wow. Ask my patient, definitely, because we have a conversation here. Multiple visits are there, so they come here. So definitely we have a good chat also. Oh, wonderful. And I can see that from the lively ambience that you have in your clinic. But I really want to ask this question on behalf of millions of our viewers. We've been talking about oral health and oral care. I think this is one topic wherein there's a lot of myths and misconceptions. तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से myths हैं जो लोगों को जानने चाहिए that this is the fact? मिथ्स स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि हम हमेशा दादी और उनकी बातें सुनते हैं और जनरेशन टू जनरेशन वो फॉरवर्ड होती रहती है. तो मिथ्स में सबसे कॉमन मिथ जो है, सबसे पहले लोगों को लगता है कि अगर दांत निकालेंगे तो आईज हमारी वीक हो जाएगी. I think my grandfather also had that similar fear. So दांत निकालने से पहले नहीं दांत नहीं निकालना है हमारी, तो आईज वीक हो जाएंगी. सो डेफिनेटली मैंने कहा कि अगर आपको दांत निकालने से आईज वीक हो जाएंगी तो डेफिनेटली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में यहाँ पे बिठा के रखना पड़ेगा मुझे. डेंटल नर्व और ऑप्टिक नर्व कंप्लीटली डिफरेंट है. ये कंप्लीट मिथ है. इसका कोई रिलेशन नहीं है. ऑलराइट. सो एंड अगेन आई टेल माय पेशेंट, एंड राइट नाउ आई थिंक आपका पॉडकास्ट हेल्प करेगा. So दिस मैसेज, ladies and gentlemen, once and for all, this is a myth. Your eyesight has no danger, no risk if you are getting treated for your teeth. Thank you. One more myth I would like to talk about. कि क्लीनिंग कराने से, जो एक डेंटल क्लीनिंग, प्रोफेशनल क्लीनिंग बोलते हैं, मतलब ब्रशिंग तो हम आई थिंक सभी करते हैं, ट्वाइस ब्रशिंग करनी चाहिए. बट जो स्केलिंग है, मतलब कि प्रोफेशनल क्लीनिंग जो डेंटिस्ट 6 मंथली आपकी क्लीन करना चाहिए, जहाँ पे आपका हार्ड डिपॉजिट क्लीन होता है, उससे बहुत लोग डरते हैं. मतलब कि
स्केलिंग सफाई कराने से दांत लूज हो जाएंगे, ये जो है ये भी एक मिथ है जो फॉरवर्ड हो रहा है बहुत टाइम से, और Yes. क्लीनिंग इससे नहीं कराते। सो बिकॉज ऑफ दैट पायरिया, गम लूज हो जाना, गम डिसीजेस, ये सारी चीजें जो है काफी प्रिवलेंट है। मतलब वन फाइन डे व्हेन वी आर इन 40s और 50s अब अचानक से हो गया, ये अचानक से नहीं होता, इट्स लाइक योर हैबिट। आप जो क्लीनिंग इतने सालों से नहीं करा रहे हैं, वो कभी ना कभी तो फिर वो एक डिजास्टर में आपको प्रेजेंट करेगी करेगी। कैन वी से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के साथ हमें दांत भी स्वच्छ और स्वस्थ रखने चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस? बिकॉज हमारे इंडियंस की आई थिंक देयर इज अ टेंडेंसी दैट वी विजिट अ डेंटिस्ट ओनली व्हेन वी आर एक्चुअली फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम। जनरल जनरल डॉक्टर्स अगर आल्सो, हमें दर्द होगा तो ही जाना है। एक रेगुलर विजिट, रेगुलर चेकअप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है। दो इतने डेंटिस्ट भी हो गए हैं और अवेयरनेस हम कंटिन्यूसली फैला रहे हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी। यस यस सो यस, ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे लोगों में आने लगा है, बिकॉज इवन आई एम सीइंग माय पेशेंट कि हाँ ओके, अब वो रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं, बट फिर भी बहुत मेजर मास जो है वो अभी भी उतना अवेयर नहीं है, एंड लॉट ऑफ अवेयरनेस इज नीडेड हियर। great. So please visit your dentist at least 6 months. 6 monthly routine checkup and for a scaling. Yes. So this is something which you should not avoid, because this is going to backfire if you think that this is not going to add up to Sure. you. Great. So apart from this, we also want to know that people have been talking about oral health as a topic. Good to talk, but कहीं ना कहीं एक मेरे से बार बार एक क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि what should we follow on a daily basis so that our health are very healthy, our teeth are very healthy, and we can have a long longevity and quality of teeth. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि जी। जो लोगों को, सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो हाइजीन मेंटेन करना। Okay. तो हाइजीन में आपकी सिर्फ 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी: ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड यूज अ गुड माउथ वॉश। Flossing. ब्रशिंग मोस्टली करते हैं, लेकिन शायद सिर्फ एक बार ही करते हैं, और 2 बार ब्रश शायद बोलते हैं, लेकिन वो स्कूलों में बोलते करता कोई नहीं है, इंक्लूडिंग मी बाय द वे। बहुत ही कम लोग जो हैं Guilty. ट्वाइस ब्रशिंग करते हैं, अनटिल अनलेस उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, True. तब वो क्योर की जगह ब्रशिंग से सोचते हैं कि क्योर हो जाएगा। जबकि ब्रशिंग ये प्रिवेंटिव है, इट्स नॉट क्योरेटिव। तो अगर आपको Okay. डिसीज नहीं प्रिवेंट करनी है तो ब्रशिंग कीजिए ट्वाइस। एंड फ्लॉसिंग बहुत, तुम आई थिंक मोस्टली 80% जो है लोग नहीं जानते हैं, इंक्लूडिंग मी। सो बट या फ्लॉसिंग मैनुअली करना डिफिकल्ट था, बट नाउ डेज वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। अमेजोन पे आप जाएंगे, वाटर फ्लॉसर्स मिलते हैं, प्लीज यूज देम। पूरी फैमिली के लिए भी अलग अलग टिप्स के मिलते हैं। एक्सप्लोर, सी रिव्यू, बट फ्लॉसिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रशिंग आप कर रहे हैं तो 35% जो है फिर भी आप जो है ब्रश नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कुछ एरियाज हैं माउथ में जो फ्लॉस से ही क्लीन होते हैं, कॉन्टैक्ट एरियाज। एंड यूज अ गुड माउथ वॉश। आपके ओरल एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल लोड को कम करता है, एंड इट डेफिनेटली गिव यू अ फ्रेश ब्रेथ। ओह फैंटास्टिक। एंड डाइट में फाइबर फूड लीजिए, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर आप जितना लेंगे उतना ही आपका जो सलाइवा है जिसमें आपका टीथ बेथ करता है वो उतना ही लिक्विड और मतलब उसका उतना ही थिन होगा। दैट आल्सो सेल्फ क्लीन योर टीथ। So drink a lot of water and have fiber in your So food. ladies and gentlemen, the key word is water, not just for your health but for your teeth as well. Thank you so much. But I also want to know that this is more about the Gen Z. We have been witnessing different type of food habits. तो आजकल जो एक shift है Indian food से हटकर, it is moving towards the pizzas and the burgers of the world. So how does it impact the oral care or oral health? डेफिनेटली फूड बहुत चेंज हो गया है जेंजी का, स्पेशली स्विगी, जोमेटो, और आई थिंक बाहर जितना भी मिल रहा है एवरीथिंग इज मोस्टली ऑफ रिफाइंड फ्लोर। इनफैक्ट हम इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं वेस्ट से, बट वेस्ट में भी लोग वो खाना उस तरह से नहीं खाते हैं जैसा हम यहाँ खा रहे हैं। दे टेक पास्ता बट देन दे हैव अ प्लेट फुल ऑफ सैलड, फाइबर। सो दे आर डूइंग, they have, this is their food but they are doing it right way, and we are eating their food but we are not doing their way. We are eating the burger, pizza without the salad plate on our side. So definitely वो सिर्फ फिर harm हो रहा है कि आप रिफाइंड चीजें खा रहे हैं, वो ज्यादा स्टिकी है नेचर में। So I think it's more double-edged sword effect. Yes. Oh, great. But now I will take a cue from this entire serious topic and we want to know कि जनरली जो डॉक्टर्स या डेंटिस्ट होते हैं, आई विल टॉक अबाउट यू फर्स्ट, वो फ्री टाइम में क्या करते हैं? हाउ डू यू एक्चुअली स्पेयर एंड एंजॉय योर पास टाइम?
जैसे मैंने बोला कि डेंटिस्ट, आई थिंक डेंटिस्ट बनते समय ये ख्याल था कि वी आर बिकमिंग अ डॉक्टर बट स्टिल वी कैन परस्यू अवर हॉबी बिकॉज Okay. दिस इज अ इलेक्टिव ब्रांच. इलेक्टिव Okay. मतलब कि इमरजेंसीज होती हैं बट कम होती हैं एज कम्पेयर टू Mm-hmm. अदर प्रोफेशन. इफ आई वर अ गायनेकोलॉजिस्ट और समथिंग which is like do and die or kind A of panic button situation. kind of. Yes, yes. So that's Yeah. we have our life and hobbies में Hmm. तो I think personality पे depend करता है क्या hobbies होती हैं. Okay. If I have a hobby of reading books Okay. Wow. and mind and I'm a nature lover, so I definitely go out trekking and kind Oh, of great. ways kind of. Wonderful, wonderful, wonderful. Okay, so any special advice or message you want to pass on to the people regarding this so-called topic? Because this is something which many people only speculate. No one knows what to do and what are the what are the do's and don'ts about it. Of Of about maintaining good teeth. Because आज भी लोगों को लगता है कि this is the most ignored organ, I would say, where people we talk about mind, mental health, we talk about physical health, but somewhere teeth somewhere get sidelined, they get isolated. I don't know how people ignore this because as a dentist I always see आप किसी भी प्रोफेशन में हो आपकी फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं Thank you. और So this I didn't ask her to say, she's saying it on her own. और दूसरा सोशल मीडिया इतना ज्यादा जो है अभी Hmm. लोग सभी लोग एक्टिव हैं. आई थिंक Hmm. यंगस्टर भी. तो फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो हाउ टीथ इज नॉट इंपॉर्टेंट इवन Oh, फॉर द yeah. कॉस्मेटिक रीजन Hmm. एंड ऑब्वियसली फॉर हेल्थ. मतलब डाइजेशन, योर डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम योर Yes. माउथ. तो हाफ Okay. ऑफ द डाइजेशन happens in your mouth Hmm. with your saliva enzymes with your teeth. So it is not important. I don't know people how this is a perception of people still. Still Okay. people don't bother about their teeth and but awareness is coming. I think people here Hmm. come for cosmetic. Oh, wow. Though our Jaipur is not like a Bollywood, but Mhm. still people are coming for the cosmetic treatment. I'm very happy to see those aware patients. No, irrespective of any location, this I can vouch that there are patients who travel to you and your clinic across the world, Yeah. and I think that is something which reminds me of the very fact that a smile is the first thing which people notice in you. Yes, that is the first thing. So now please help me in understanding a very sensitive topic which I didn't want to ask you, but I have been forced to ask this from so many people. So we see a lot of companies coming up with ads that claim, so much so that they actually claim to offer you the universe as far as the toothpaste and the toothbrush and all these products are concerned. What is your take on the claims that these big companies make about oral health? Okay, I think मैं किसी का business शायद खराब कर दूँ. It's a no filter kind of a podcast, you can be very honest. Yeah, but हाँ मतलब कि एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा आजकल फोकस हो रहा है कि Yes. टीथ वाइटनिंग पेस्ट आ गए हैं और ये चारकोल एक्टिवेटेड है और इससे आपका मतलब so many Ayurvedic paste Yes, are yes, yes, there yes. which मैं बोलूँगी कि इसमें अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ तो a lot of things are not there which should be in Oh, a toothpaste. So please pay always, attention, guys. yes, yes, always मैं आपको सजेस्ट करूँगी take a certified toothpaste. और Okay. certification में मतलब जैसे कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हैं वो these are good for gums. Okay. बट दे आर नॉट क्लीनिंग. उनके अंदर जो पॉलिशिंग एजेंट हैं वो अप्रोप्रिएट साइज में अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं होते हैं. Okay. वाइटनिंग Okay. पेस्ट लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं. मतलब दैट हम्म. शुड बी रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट क्योंकि उसका एक ड्यूरेशन Oh. होता है. बट आई हैव सीन इवन इन माय फ्रेंड्स अगर हम कहीं यहाँ स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉशरूम में परमानेंटली वाइटनिंग पेस्ट रखा हुआ है. Okay. इट डज डेफिनेटली स्केयर्स मी बिकॉज आप डेली वाइटनिंग पेस्ट यूज कर रहे हो जिसमें पॉलिशिंग एजेंट आई थिंक हार्श होते हैं जो आपको इमीडिएट इफेक्ट तो देते हैं. तो मार्केटिंग इसी पे चलती है. मार्केटिंग ऐसे चलती है कि आपने इमीडिएट इफेक्ट दिया और वो प्रोडक्ट सेल होने लग जाएगा. बट लॉन्ग टर्म में उसके डैमेजेस होते हैं. Okay. फर्स्ट दे Okay. विल रिमूव योर फर्स्ट लेयर. Oh my goodness. You will feel good and your teeth will appear white and you continue its use. It's sounding like You are encouraged to continue its use, and after 8 months, after some years, your enamel will definitely get damaged. it sounds like a horror movie. God. So definitely please ask your dentist जहाँ भी आप जाते हैं ask your dentist to choose a good toothpaste.
not go by marketing and this business thing. Oh goodness. So this is something very, very important, and I want all our viewers to actually take a cue from this. Don't go by those glamorous ads which are sponsored by people, endorsed by people and celebrities who may or may not use themselves. Yes. So now there's something very tricky and very funny which I want to ask you. मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये सच है कि जब आप किसी डेंटिस्ट से बात करते हैं तो वो आपके पूरे फेस में सिर्फ आपके टीथ की तरफ देखते हैं? There is something wrong with our eyes. But yeah, I think ये सभी प्रोफेशन में होता है, जो भी जिस प्रोफेशन का होता है उसका फोकस वहाँ पे आ जाता है. If something is off, वो जरूर नोटिस होता है. तो हाँ, this is true. So do people get conscious when they talk to you if they have problems? Teeth problems? I think people are not aware of it. It is like we are aware of it, so obviously जो आप aware होते हैं वो आपको पहले दिखाई देती है. So we try hard to ignore those that thing in our social events. Whenever we go, we try to ignore because But they must be, there must be patients and clients of different shapes, sizes, and problems. Any funny incident that you think you came across which actually makes you even tickle today also? A funny instance like they come up with some questions. Yeah, हाँ, जैसे कि जनरली कुछ पेशेंट जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने आते हैं वो एक फोटो लेके आते हैं. जैसे कि एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो माधुरी दीक्षित की स्माइल लेके आई. Oh goodness, seriously? डॉक्टर कैन हैव दिस स्माइल. Oh my God. क्या आप ऐसी स्माइल डिजाइन करके दे सकते हैं? तो हाँ, मतलब ऐसे ये लोगों के इसमें, क्योंकि दे आर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग और कुछ ऑफ लगता है, तो जब कहता है कि जब हम ट्रीटमेंट कराने जा ही रहे हैं कॉस्मेटिक, तो आई शो यू कि ऐसा कर दीजिए. बट इट इज प्रैक्टिकली डेफिनेटली मैं उनको फिर प्रैक्टिकल उस पर लाना पड़ता है मुझे कि सबका जॉ शेप, टीथ शेप, फेस सब कुछ अलग होता है. तो हाँ, बाय फोटो हम नहीं कर सकते. डेफिनेटली वी इम्प्रूव योर स्माइल. आपकी जो पहले वाली स्माइल है उससे इम्प्रूव कर देते हैं, बट हाँ, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कि उसके जैसी स्माइल हो जाए. This reminds me about जेनेटिक्स चेंज करने पड़ेंगे. This reminds me about the funny and stupid thing that I did when I went to the gym for the first time. मैंने अपने जिम ट्रेनर को सलमान खान की फोटो दिखा के बोला मुझे ऐसा बनना है, and I am sure he must have really ridiculed me in his mind. उन्होंने मुंह पे तो नहीं बोला, but that is a complete misconception when people actually want to copy someone else. I think most in our body mostly things are genetically controlled. Okay. And definitely we can improve it with our environment and but 80% of things are definitely genetically controlled. Your dental diseases also, your jaw shape, teeth shape, everything is like genetically derived from your family. Fantastic. So the genes are yeah, we are here to solve the problem and give you a good smile, but we cannot imitate another person. So let's be original. Why to copy someone else? Yes. Let's be original. Let's be the OG, guys. Okay, so that brings me to the last question, which I am sure that people want to know. कि अगर आप डेंटिस्ट नहीं होते तो आप क्या होते? Oh my God. तो I think that scares people if I say कि डेंटिस्ट नहीं होते तो क्या होते. वैसे तो मुझे हॉबीज बहुत सारी हैं. Okay. ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है और बुक्स के साथ मैं माइंड भी रीड करती हूँ. तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजी इज वन सब्जेक्ट व्हिच आई रियली वांट टू परस्यू राइट नाउ आल्सो, बिकॉज़ मैं अभी भी एक IIT का शायद एक कोर्स भी होता है साइकोलॉजी में जो ऑनलाइन होता है. मैं वो भी ढूंढती रहती हूँ कि शायद मैं एक दिन उसको करने वाली हूँ. हाँ, प्रैक्टिकली डेफिनेटली डेंटिस्ट नहीं होती तो मैं शायद साइकोलॉजिस्ट. Oh, is that the reason that you understand your patient problems without they even speaking for it? Yeah, that helps me in my profession and also in my personal life. I'm very selective. Oh goodness. I can vouch for that. Thank you so much. And in the last, any message that you want to give to our audience? Just I take care of your smile. As a dentist तो मैं यही बोलूँगी, and आप खुश रहिए, मस्त रहिए. और so guys, keep smiling and make your life even better and complete and enjoyable with that big smile that you will pass on to the people you meet. Thank you so much. It was really amazing. And